Introduce myself. I'm Dr. Sondi. I did my MD in 1980, 1980. So welcome 2019 Subharti final year batch. This is the first lecture and I thought हम लोग जनरल बात करेंगे. आप एग्री करेंगे कि the most important thing in medicine, surgery or any other place is diagnosis. If you have not been able to diagnose, then you can't treat the patient. Or many a times in your final year examination, you diagnose the case well. You diagnose this is mitral stenosis and still you manage to fail. Why? Because the examiner is looking at how you reach the diagnosis. He's not looking at the final diagnosis. Because most of us jump to a conclusion. है ना? Diastolic murmur सुनी, छलांग लगा दी कि ये तो mitral stenosis ही है. While he wants to hear everything. Is there a pre-systolic accentuation? Where is the diastolic murmur? Where is it radiating? And all those things. So, we do not want you to develop a habit of jumping to conclusion. We want you to develop a habit of reaching a conclusion. I don't know whether you can recognize these two figures. Who is this? Who's this? Sherlock Holmes. This is Sherlock Holmes. Who's that? Who's that? You will not remember, right? Because he is the writer of Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. And I'm not sure आप लोगों ने शेरलॉक होम्स की किताबें पढ़ी या नहीं पढ़ी, बट अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पढ़िए. बिकॉज द आर्ट ऑफ डिडक्शन स्टार्टेड इन द करेंट एरा बाय आर्थर कॉनन डॉयल. Who was he? He was a writer, of course, but who was he primarily? What was his profession? No one? Physician. So he was a physician by profession, but his practice didn't do well. And he used to write stories. So he started writing stories, and this was about 130, 40-year-old. And still we read those stories. We see those hounds of Baskerville and so on and so forth. And how he used to deduce everything. So actually the art of deduction started with him. But unfortunately, you don't remember him. He actually observed a doctor known as Joseph Bell, who used to deduce like this. And on the character of Joseph Bell, he made Sherlock Holmes. That was the start of the deduction. So all of us know that diagnosis is the crux of the treatment. अगर आप किसी पेशेंट को ठीक से डायग्नोज ही नहीं कर पाए तो उसका इलाज क्या करोगे? कर ही नहीं सकते. अगर आप डायग्नोसिस पता है तो इलाज आसान है. वो तो लिखा है, बुक्स में लिखा है. यू गो टू एनी बुक एंड यू कैन ट्रीट. बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि डायग्नोसिस सिर्फ साइंस नहीं है, ये आर्ट भी है. This is an art, and so today we will talk not as much about the science because वो तो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, but art of diagnosis. कुछ लोग कहते हैं और कई बार ये सोचते भी हैं कि ignorance is bliss, कि पता ही नहीं है आपको कुछ. मुझे याद आता है मेरा एक सीनियर went to UK और उनको जाना था एनेस्थीसियोलॉजी में. वो चले गए सर्जरी में, मिली नहीं एनेस्थीसियोलॉजी, सर्जरी में चले गए. शुरू के दिन थे. एक पेट दर्द का मरीज़ आया और उसका अगले दिन सर्जरी थी.
तो सब लोगों ने ये डिसाइड किया, पूरे डिपार्टमेंट ने, कि सब लोग अपनी अपनी डायग्नोसिस एक पर्चे पे लिखेंगे, उसको क्लोज करके हम अलग रख देंगे, और वो सब पर्चे खुलेंगे बाद में जब हमारी सर्जरी हो जाएगी कि किसकी डायग्नोसिस ठीक थी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गया, उसने 1 घंटा लगाया, एसोसिएट प्रोफेसर्स गए, उन्होंने अपना टाइम लगाया, हमारा दोस्त भी गया सीनियर, वो गया 5 मिनट में वापस आ गया, उसने भी पर्ची लिख दी, सबकी पर्ची बंद करके रख दी गई। अगले दिन खुला जब सर्जरी के बाद, तो सिर्फ उसकी पर्ची ठीक थी, उस पर लिखा था एक्यूट एपेंडिसाइटिस। तो सब लोगों ने हैरान हो के उससे पूछा कि यार तुमने डायग्नोस कैसे कर दिया, इसमें तो ये था, इसमें तो वो था। सो दैट फ्रेंड इज टेलिंग मी कि यार मुझे तो राइट आइलियक फोसा में एक ही कारण पता था, दर्द का। तो मैं किसी दूसरी चीज़ को सोच ही नहीं सकता था, तो मेरे पास तो एक ही डायग्नोसिस थी, मैंने वही लिख दी। हम सब लोग शुरू इसी स्टेज से करते हैं कि हम सब लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती नहीं है, लेकिन ये स्टेज अच्छी नहीं है ना, ये तो तुक्के वाली स्टेज है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्टेज ऑफ आवर। This is a quotation which has lived, stuck with me since the time I read. I don't know what book of pathology do you read. I used to read Boyd's Pathology, B-O-Y-D, Boyd's Pathology. In one of the chapters, he wrote this as a starting point, and it has stuck to my mind, is your eyes don't see what your mind doesn't know. अगर आपके दिमाग में कोई साइन नहीं है, तो वो साइन सामने प्रेजेंट होगा और आपको दिखाई नहीं देगा। What does that mean? That means primarily you have to attain knowledge. जब तक नॉलेज नहीं है तो पता ही नहीं है आपको कि क्या क्या होता है, तो वो दिखेगा भी नहीं। अब देखिए, कई बार वो साइन बिल्कुल आपके सामने होता है। लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, डिस्कॉइड लीजन ऑन द फेस इन सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस। वो डिस्कॉइड लीजन सामने पड़ा है, हो सकता है आप देखें, हो सकता है ना देखें। पामर एरेथिमा है, हो सकता है आप देखें या ना देखें। स्पाइडर नीव आई है, हो सकता है वो आपको वो कपड़े उतार के देखें ना। तो कई बार तो साइन सामने होता है, लेकिन कई बार उसे ढूंढना पड़ता है एट प्लेसेस वेयर यू डोंट वांट टू गो, राइट? लाइक दिस लेडी केम टू मी yesterday. I am sorry you are not able to see it properly, but that was, and when you ask her to flex the neck, there was this, you can't see it correctly, but there was this acanthosis nigricans. So acanthosis nigricans, which is a hallmark of insulin resistance, will not be seen unless you ask the patient to bend the neck. And in the fold, the acanthosis nigricans will be lying. And maybe in the axilla, you have to ask her to do leg. And then in the axilla, you will see this. So many times, the signs are present in front of you and you don't see it because it's not in your mind. But many times, it's slightly hidden. And so you have to go into the places where you don't want to go. Where do you don't want to go? You don't want to examine in the axilla. You think it's a bad place to go. Why should you go there? You don't want to examine inguinal region. So, but believe me, in many of the pyrexia of unknown origin, I have scored over other doctors by poking my fingers in the axilla and getting a lymph node there. So, you have to go to places where you don't like to go.